गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज थोड़ा बहुत अगर हुआ तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स का रिवीजन कर लेते हैं बेटा। कल के दिन थोड़ा एक स्टार्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द रेशियो ऑफ एरियाज within the electron orbits for the first excited state to the ground state of the hydrogen atom is how much? The ratio of areas पूछ रहा है, the ratio of your areas. What will be the answer बेटा, कोई बता सकता है? The ratio of areas, areas मतलब रेडियस में लिख सकता हूं मैं इसको, तो रेडियस निकालो। रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? रेडियस ऑफ योर nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू योर हाँ, तो क्या आ रहा है देखिए बेटा, एरिया पूछ रहा है ना बेटा। द रेशियो ऑफ एरियाज विद इन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? कितना आ रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कितना बेटा? व्हाट विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? n is equals to, ये जो होगा ग्राउंड स्टेट, that will be equal to your 1, यानी ये हो जाएगा n is equals to 2, so this will be your first excited state. So what will be the answer? बोलना बेटा, बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन है, चार्ट बॉक्स में आंसर देना जल्दी जल्दी। फोर इज टू वन, 16:1, बाप रे। और कुछ? नहीं आता? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यू टेक n is equals to 2 बेटा। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब z की वैल्यू हो गई 1। कितना आ रहा? एरिया से ना बेटा, एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, पाई इनटू योर r स्क्वायर। radius of your nth orbit will be equal to how much for me beta? N square divided by your z. So ground state matlab n is equals to 1, यानी right now for me excited state मतलब r2 और ground state मतलब r1, यानी ये हो जाएगा 2 square 4 और ये हो जाएगा 1 square 1, ठीक है ना? एरिया पूछ रहा है ना बेटा, तो एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, a1 by your a2 will be equal to r1 square divided by your r2 square. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट जा रहे हैं अपन, यानी यहां से यहां तक, isn't it? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मैंने क्या लिया, 2। कितना आ जाएगा?
Very good. Very good. कितना आ आंसर? Next one. Very good बेटा, आ गया. Kinetic energy of electron revolving around a nucleus will be equal to how much for me? 4 times of the potential energy, double of the potential energy, equal to potential energy, half of its potential energy. Kinetic energy of the electron revolving around the nucleus will be half of its potential energy. Direct theory based question. D. Very good. Next one. Taking the Rydberg's constant RH as 1.097 into 10 to the power of 7 meter, first and second wavelength of the Balmer series in the hydrogen spectrum will be equal to how much? Formula yaad hai sabhi ko? 1 by lambda is equals to your R into, this one is your 1 by N1 square minus of your 1 by N2 square. Isn't it? For the first wavelength, N1 will be equal to how much for me beta? First and second wavelength के लिए बोल रहा है, so I'm writing for first wavelength. For the first wavelength, N1 will be equal to 2 and N2 will be equal to 3. And lambda 1 will be equal to how much for me beta? So lambda 1 आ रहा कितना देख लीजिए. For second wavelength के लिए, for second wavelength Balmer series के लिए, N1 will be equal to 2 and N2 will be equal to 4. Very good. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. ठीक है ना? देखो यहाँ पर N1 और N2 की भी वैल्यू मालूम है, so 1 by lambda 1 यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वेवलेंथ के लिए. N1 की वैल्यू आप 2 स्क्वायर डाल दीजिए और N2 की वैल्यू 3 स्क्वायर डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिए, will give me the answer. Fourth option will be the answer for this one. Next one. An electron changes its position from orbit, n is equals to 4 to n is equals to 2 of an atom. The wavelength of the emitted radiation is how much for me? Same formula again, 1 by lambda is equals to your R into your 1 by, ये हो जाएगा मेरे पास n1 square minus 1 by n2 square. Isn't it? So from an orbit n is equals to 4 से लेके n is equals to 2, यानी this is your R into n1 value will be equal to 2 square minus this one is nothing but of your 4 square. So this will be equal to your R into your 1 by 2 square is 4 minus 1 by 4 is 16. So this is your 1 by lambda. So lambda will be getting it as of your 16 lambda निकालना ना, 16 into your R. Isn't it? तो कितना आ रहा देखिए बेटा. So this will be equal to your 16 LCM is 3R. 16 divided by your 3R. देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार. Second option. Very good. The next one. The energy of electron in the nth orbit of your hydrogen atom is expressed as En is equals to minus 13.6 divided by n square electron volt. The shortest and the longest wavelength of the Lyman series will be equal to your how much? Energy दे रखा है मेरे पास 1 by lambda max के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, that will be equal to your R into your n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 square minus 1 by ये हो जाएगा 2 square. यानी lambda max will be coming out for me 4 by your 3R. 4 by your 3R मतलब approximately इसकी वैल्यू होती है 1213 angstroms. Isn't it? Shortest and the longest. Longest तो आ गया मेरे पास सीधा सीधा, तो बाकी का करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फर्स्ट ऑप्शन में लिख सकता हूँ क्योंकि 1213 है, बाकी का कैलकुलेशन चले जाएगा बेसिकली. फिर भी मैं कर रहा हूँ मिनिमा के लिए, अगर लिख रहा हूँ तो 1 by lambda minima will be equal to your R into your 1 by 1 square and it will be infinity. यानी lambda minima will be equal to 1 by R and 1 by R की वैल्यू आप लोग को मालूम है, it is 1910 angstroms. हाँ चलो, very good. Next one.
The ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What is the potential energy of the electron in this state will be equal to how much? बोलना जल्दी से. Potential energy हम लोग अभी लिखे. Potential energy will be equal to 2 times of your total energy. क्योंकि total energy is potential energy divided by 2 लिखे थे ना अभी अपन. So it is 2 into your minus 13.6. So 2 times of 13.6 is 27.2 electron volt. Second option. एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा 17th के दिन बेटा. चलिए. The diagram shows the एक से दो क्वेश्चन आ जाएंगे. The diagram shows the energy levels for an electron in a certain atom, which transitions shown represents the emission of the photon with most energy. क्वेश्चन पढ़िए पहले, हम लोग को डायग्राम भी देखना है अभी. The diagram shows the energy levels for an electron in a certain atom, which transition shown represents the emission of the photon with most energy, most of your energy. ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार. ये वाला डायग्राम. चलिए बताइए, यहां से देखिए, ये तो ऊपर जा रहा है, isn't it? ये तो कतई नहीं हो सकता. मोस्ट ऑफ द एनर्जी मतलब अपने को राइट नाउ होना क्या है बेसिकली 1 2 3 और 4 ऑप्शंस दे रखा है. क्या फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा. इमीडिएट एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा अपन. डेल्टा E इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू 1 बाय ये हो जाएगा N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. isn't it? तो 2 से अगर मैं 1 आ रहा हूं तो that will give me the energy maximum. यानी थर्ड वन लिख सकता हूं. ठीक है, नेक्स्ट वन. The magnetic moment of a revolving electron around the nucleus varies with the principal quantum number n as of your how much? Directly proportional. Magnetic moment is directly proportional to the principal quantum number n. ठीक है, next one. The energy equivalent to 1 kilogram of matter is about how much? Energy निकालने का तरीका E is equals to your m into your c square. कितना मास का 1 किलोग्राम का 1 into ये हो जाएगा 3 into 10 to the power of 8 whole square. यानी that will be equal to 9 into 10 to the power of 16. यानी this will be approximately 10 to the power of your 17 joules. Fourth option. ठीक है, next one. If binding energy of the deuterium is 2.23 mega electron volt, the mass defect given in AMU will be equal to how much? Mass defect निकालने का फॉर्मूला delta M will be equal to your binding energy divided by your total mass defect. यानी binding energy की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर. So it will be equal to your binding energy will be equal to 2.23 MeV है. So divided by your 931. So that will be approximately 0.0024. In the fourth option. Next one. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11. Energy levels A, B, C of a certain atom corresponding to increasing values of the energies. That is, EA is lesser than EB, EB lesser than EC. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of radiations corresponding to the transition C to B, B to A, and C to A, respectively, which of the following statement is correct? ये बोलना आप लोग. ध्यान देखो, C से B तक आ रहे हैं लैम्डा 1 है, B से A तक जा रहे हैं लैम्डा 2, C से लेके A तक आ रहे हैं लैम्डा 3, isn't it? So energy in A, B, C अगर मान के चलो, energy of your A मैं लिख रहा हूँ basically EA, energy of this one I'm writing it as of EB, and energy of this one I'm writing it as of your EC. ठीक है ना? तो A, B, C में अगर मैं लिख रहा हूँ तो energy of your C minus energy of your B plus energy of your B minus energy of your A will be equal to your energy of your C minus energy of your A, energy difference का. यानी EC से EB, C से लेके B तक आने के लिए, C से लेके B तक आने के लिए वेवलेंथ कितना है? लैम्डा 1, यानी HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस देन B से लेके A तक, B से ले तक A तक आने के लिए लैम्डा 2, यानी दिस विल बी योर HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2.
इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा HC डिवाइडेड बाय लैम्डा 3, ये वाला चले गया, so this will be equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2 is equals to 1 by lambda 3, यानी lambda 3 will be equal to lambda 1 into lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2. Clear है? Very good. तो second option accept. हाँ. Next question. 12th one. A beam of fast moving alpha particle are being directed towards a thin film of gold. The part A dash, the part A dash, B dash and C dash of the transmitted and reflected beams corresponding to the incident parts A, B and C of the beam are shown in the adjoining diagram. The number of alpha particles in B dash will be minimum and C dash will be maximum. A dash will be maximum and B dash will be minimum. A dash will be minimum and B dash is maximum, and C dash will be minimum and in B dash it will be your maximum. Good question, beta. देखो, atom is generally hollow and whole of the mass is being concentrated in the small center called as of your nucleus, isn't it? अब पूछ रहा क्या वहां पर basically the number of alpha particles will be equal to how much? ये तो nucleus होगा ना बेटा, तो जितने alpha particle यहाँ पर डाले उतने वापस चले जा रहे हैं basically, तो ये पूरा transmit होके जा रहा है basically, transmit होने जा रहा मतलब A dash will be maximum and B dash will be obviously minimum क्योंकि totally reflect हो रहा है, तो second option will be the answer for this. Clear? Chalo. According to the Bohr's theory, the radius of electron in an orbit described by the principal quantum number n and atomic number z is proportional to what? So I hope you remember this relation, beta. Radius is directly proportional to n square and inversely proportional to your atomic number. Yani fourth option will be the answer. Next one. If m is the mass of electron, v is its velocity, r the radius of the stationary circular orbit around the nucleus with charge Ze, then from Bohr's first postulate, the kinetic energy k is equal to half mv square of the electron in the CGS system will be equal to your how much? कोई बताएगा इसका आंसर? m is the mass of electron, v is its velocity, r is the radius of stationary circular orbit around a nucleus. यानी इस न्यूक्लियस के अंदर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है which is been revolving in the circular orbit और सेंटर पे अपने पास न्यूक्लियस है और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है बेटा r. इन द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा जो फोर्स लगेगा इसके अंदर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स लगेगा which is been provided by the necessary centripetal force for the revolution. यानी kinetic energy will be equal to यानी दोनों के बीच में फोर्स जो आएगा basically that will be equal to k हो जाएगा constant basically. So that will be equal to Z into your E square divided by R square will be equal to your M into V square divided by R. यानी M into V square will be equal to Z into E square divided by R. So kinetic energy कैसे लिख सकता हूँ मैं? Kinetic energy is equals to half into M into V square. So that is equals to half into M into V square is Z into E square divided by R. And Z square divided by 2R will be the answer. Z square divided by 2R. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए. वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. अगेन figure shows the energy levels P, Q, R, S and G of the atom where G is the ground state. A red line in the emission spectrum of the atom can be obtained by the energy level changing from your Q to S. A blue line can be obtained by the following energy level changes of your how much? देखो बेटा एनर्जी इन द रेडिएटेड ट्रांसमिशन एनर्जी जब लिख रहे हैं हम लोग, यानी अगर मैं लिख रहा हूँ एनर्जी फ्रॉम योर रेड से लेके ग्रीन तक विल बी ग्रेटर देन ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर क्यू टू योर एस, दैट विल बी ग्रेटर देन ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर आर टू योर एस, and this will be your greater than energy from your Q to your R, and this will be greater than energy from your P to your Q. And for getting the blue line, energy radiated should be your maximum, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, isn't it? यानी जिसके पास एनर्जी मैक्सिमा उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? यानी विबजीआर में लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, सो विबजीआर में ब्लू लाइट इज समवेयर हियर,
यानी 4500 एंगस्ट्रॉम से लेके दिस विल बी 7500 एंगस्ट्रॉम्स, यानी वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी रेड का वेवलेंथ मैक्सिमा। अगर वेवलेंथ मैक्सिमा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो रेड एंड ब्लू में किसकी वेवलेंथ ज्यादा रहना चाहिए? ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा रहना चाहिए, यानी फॉर गेटिंग द ब्लू लाइन एनर्जी रेडिएटेड शुड बी मैक्सिमम। तो एनर्जी मैक्सिमम किसके पास हो जाएगी बेटा? देखो यहां से यहां तक होगी रेडिएशन, आर से लेके एच तक, यानी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 16th one here. The figure indicates the energy level diagram of an atom and the origin of the 6 spectral lines in the emission. Example, line number 5 arises from the transition level B to A. B2 से लेके A तक 5 level, ये दे रखा diagram में. The following spectral lines will also occur in the absorption spectrum. See, absorption lines are obtained when electron jumps from which state, beta? Ground state to your higher energy state. Yani N is equals to 1, 2, 3 lines will be obtained for this one. So it should be only the 3. क्योंकि absorption spectrum कहाँ पर होता है? Absorption line spectrums are obtained when electron will be jumping from what? Ground state to your higher energy levels. यानी the only thing which we can give this one is right now from your ground state, मतलब 1, 2, 3 go on like that. ये तो पूरा higher हो गया basically. ये भी higher होगा, ये भी नहीं होगा. तो only third option will be the answer. 17th one देखिए बेटा. When a hydrogen atom is raised from the ground state to an excited state, potential energy increases and kinetic energy decreases. Potential energy decreases and kinetic energy increases. Both kinetic energy and potential energy increases. Both kinetic energy and potential energy will decrease. बताना है. Potential energy का relation क्या है बेटा? Potential energy is inversely proportional to your 1 by r with negative term, and kinetic energy is also inversely proportional to your r. यानी as r increases, अगर r increase हो रहा है तो kinetic energy क्या हो जाएगा? Kinetic energy will decrease, but potential energy will increase. Potential energy will increase. यानी 17th one के लिए potential energy increases, kinetic energy decreases. ठीक है, चलिए 18th one. An electron in N is equals to 1 orbit of hydrogen atom is bound by 13.6 electron volt. If hydrogen atom is in the state N is equals to 3 state, how much energy is required to ionize it? Isn't it? And the required energy is right now from where beta? N is equals to 1 orbit of hydrogen atom to N is equals to 3. है कि नहीं? यानी energy will be equal to your E3 is equals to ionization energy है तो plus में आ जाएगा divided by 3 square. And that will be equal to 1.51 electron volt. Fourth option will be the answer. Done? Sure. 19th one. In a Thomson setup for the determination of your E by M, electron accelerated by 2.5 kilovolt enters the region of the cross electric and magnetic fields of strength 3.6 into 10 to the power of 4 volt per meter and 1.2 into 10 to the power of minus 3 Tesla respectively, and go through undeflected. The measured value of E by M of the electron is equal to your how much? देखो बेटा, E by M is your specific charge यहाँ पर, तो E by your M will be equal to your E square divided by your 2 into your potential into your B square. तो इसमें सब कुछ दे रखा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो E की वैल्यू दे रखा है ये, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ E, और ये हो गया वैल्यू ऑफ योर P, and the potential accelerated by your potential 2.5 kilovolt. सब कुछ दे रखा है, उसको डाल के सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. I am not doing the calculation, आप लोग कर लीजिए. 3.6 into 10 to the power of 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 into पोटेंशियल कितना है 2.25, ये किलो वोल्ट है बेटा, यानी into 10 to the power of 3 डालना नहीं भूलना है इसको, और मैग्नेटिक फील्ड इज 1.2 into 10 to the power of minus 3, और इसका भी हो गया है होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. ठीक है, next one 20. Electric field and magnetic field in the Thomson mass spectrograph are being applied simultaneously or perpendicular but not simultaneous. देखो electric field and magnetic field in Thomson's electric fields are parallel beta. Electric field will be parallel to your magnetic field. ठीक है ना? So it should be parallel to each other. Next one. An electron is being accelerated through a potential difference of 45.5 volt. The velocity acquired by it will be equal to your how much? यानी potential will be equal to under root of your velocity of this one will be equal to how much for me beta? V is equals to 2 into E into your potential divided by your mass.
So velocity acquired will be equal to your V is equals to this formula. तो ये भी डाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा. 2 into charge of electron 1.6 into 10 to the power of minus 19, potential 45.5 divided by your mass. Mass of the electron 9.1 into 10 to the power of minus 31. इसको देख लीजिए, that will give me the answer for that. ठीक है, चलिए next one. A charge of magnitude 3e and mass 2m is been moving in electric field. The acceleration imparted to the charge will be equal to how much? आप लोग को मालूम है force will be F is equals to E into Q. Force will be equal to mass into acceleration, that is EQ. So acceleration will be equal to EQ by your F. ये formula apply कर लीजिए. So charge कितना दे रखा है मेरे पास? Magnitude of the charge is nothing but 3 और electric field E है, तो E into your 3e divided by your mass. Mass कितना दे रखा है basically अपने पास 2m. ठीक है ना? So that will give me the answer. ये कितना आ रहा देख लीजिए. So it is 3 times of 3 divided by 2m. Second option will be the answer. 23. An alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 to the power of 6 volt. Then kinetic energy of the particle will be equal to your how much? Kinetic energy will be equal to your potential difference दे रखा है. So alpha particle has been accelerated through a potential difference of 10 to the power of 6 volt. Then kinetic energy of the alpha particle will be equal to how much? Potential में लिखना है ना directly. V is equals to W divided by Q बेटा. यानी W is equals to V into Q. यानी work done is nothing but what? Form of a kinetic energy only ना. तो potential multiplied with your charge. Potential is 10 to the power of 6. Alpha particle के लिए charge कितना हो जाएगा बेटा? 2 times of the charge of your electron. यानी this will be equal to how much for me? 2 into 10 to the power of your 6 electron volt. यानी this will be equal to 2 mega electron volt. Third option. फॉर्मूले से याद होते बल्कि करा रहा हूं बेटा, से ज्यादा कुछ भी नहीं. The de Broglie wavelength of an electron having 80 electron volt of energy is nearly how much? The de Broglie wavelength of electron having 80 electron volt of energy, यानी अपने को एनर्जी में लिखना है de Broglie wavelength. फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा is equals to h divided by under root of your 2m into your energy E. h की वैल्यू मालूम है अपने को 6.6 into 10 to the power of your minus 34 divided by your ये हो जाएगा 2 into your mass of this one is how much? 9 into 10 to the power of minus 31 into potential is 80 electron volt, यानी 80 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. इसका देख लीजिए कैलकुलेशन, that will give me the answer. ठीक है, चलिए 25. If an electron and proton propagates in the form of waves having the same wavelength, it implies that they have the same energy, momentum, velocity, and angular momentum. देखिए बेटा, in electron and photon propagation बेटा in the form of waves, they will be having the same wavelength. It implies that they will be having same momentum. If there is a same momentum, because momentum is equals to your inversely proportional to your wavelength. अगर wavelength same रहेगा, then they have the same momentum. Second option. Very good question. Next one. The de Broglie wavelength of a particle moving with a velocity 2.25 into 10 power 8 meter per second is equal to the wavelength of the photon. The ratio of kinetic energy of the particle to the energy of the photon is how much? Velocity of the light is 3 into 10 to the power of your 8. Kinetic energy of the particle अगर मैं लिख रहा हूँ बेटा, kinetic energy of the particle will be equal to half into m into your v square, and wavelength will be equal to h divided by m into your v. यानी kinetic energy of your particle will be equal to your half into mass will be equal to your how much from this one. यहाँ से अगर मैं mass लिख रहा हूँ तो mass will be equal to h divided by lambda into your v. ठीक है ना? So this will be equal to your h divided by lambda into your velocity v into your velocity ये हो गया मेरे पास v square, यानी ये हो जाएगा मेरे पास v into your h divided by 2 into lambda. This is the kinetic energy of your particle. अब kinetic energy of photon लिखना है मुझे. Kinetic energy of your photon will be equal to hc divided by lambda. So kinetic energy of the particle divided by kinetic energy of your photon will be equal to how much? Kinetic energy of the particle कितना है बेटा? V into your h divided by 2 into lambda into ये हो जाएगा lambda divided by h into c. A lambda चले गया, isn't it? So that will be equal to how much will be? Mu into your h divided ये h और ये h भी चले गया,
So it will be equal to mu divided by 2 times of c. Yani this velocity is given how much for me? 2.25 into 10 to the power of 8 divided by 2 into velocity of light 3 into 10 to the power of 8. इसको कर लीजिए, approximately we'll get the answer for that. चलो 27. The de Broglie wavelength of a particle accelerated with 150 volt potential is 10 power minus 10 meter. If it is accelerated by 600 volt potential difference, its wavelength will be equal to how much? Wavelength is inversely proportional to your potential na beta. Yani lambda 1 divided by lambda 2 will be equal to under root of your v2 divided by v1. And the first one का wavelength कितना है? 10 power of minus 10 divided by wavelength lambda 2 निकालना है under root of your accelerated your potential of your 600 volt, initial कितना है? 150 volt. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, यानी lambda 2 will be equal to 1 by 2, यानी 0.5 angstroms लिख सकते हैं. ठीक है, चलो now this question is important beta. A nucleus XZA emits 9 alpha particle and 5 beta particles. ये बीटा होना चाहिए, ठीक है ना? This one is 5 beta particles. The ratio of total protons and neutrons in the final nucleus will be equal to how much? Can anyone tell me the answer for this one? Good question. अगर कल आया समझो आप लोग, क्या आंसर टिक करके आएगा बताइए. मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो इसको. This one is your X, Z, A. और ये emit कर रहा है कितने? 9 alpha particles. 9 alpha particle emit कर रहा है, तो atomic number will decrease by your. So we'll get some element X. This will be Z minus of 18. Mass number will decrease by your alpha particle के लिए 4. तो 9 times है, तो this will be your A minus of 4 into this one. यानी ये हो जाएगा मेरे पास 36. ठीक है ना? And this again undergoing right now for me what beta? क्या अंडर कर रहा है ये? Beta particles. कितने beta particles? 5 beta particles. Fourth one option बोल रहे हैं कोई, देख लेते हैं. तो 5 बीटा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? X. Atomic number will be right now, this is Z minus of your 13 minus 5. And mass number will be equal to your minus of your 36. Mass number will remain same, no? But there is no change in mass number, right? Atomic number will decrease. यानी Z की value, number of protons कितने हैं बेटा? 13. Number of neutrons अगर लिख रहा है मैं basically, number of your neutrons will be equal to your how much will be बेटा? A minus of 36 minus this will be Z minus of your 13, and this will be equal to how much beta? A minus Z minus of your 23, isn't it? यानी he's asking proton divided by neutron. Proton की value आ गई मेरे पास कितनी? 13, isn't it? So number of protons will be equal to how much beta? Number of protons will be, या कितना दे रखा है यहाँ पर ऊपर? Z. तो मैं लिख सकता हूँ Z minus of your 13. Yeah. So this will be your Z minus of your 13 divided by A minus Z minus of your कितना आ जाएगा बेटा? 23 आएगा. First option. Sure. Next one, 29 is also a good question. देख लीजिए, can anyone give me the answer for this one? The energy level diagram for an hydrogen-like atom is shown in figure. The radius of its first Bohr orbit is energy level n is equals to 1 के पास दे रखा है, 2 के पास दे रखा है, 3 के पास दे रखा है और infinity दे रखा है. Energy का फॉर्मूला क्या है बेटा? Energy of your nth orbit is equals to minus of 13.6 into z square divided by n square electron volt. ठीक है ना? Radius of nth orbit का फॉर्मूला क्या है? Radius of nth orbit is 0.53 into your n square divided by z angstroms. For n is equals to 1 अगर मैं ले रहा हूँ, तो energy will be equal to minus of 54.4 electron volt. यानी minus of 54.4 is equals to minus of 13.6 into z square divided by n square is nothing but 1. And इसमें से निकालो तो z की वैल्यू आ जाएगी 2.
अगर z की वैल्यू आ गई 2, the radius of the first orbit will be equal to how much? r is equals to 0.53 into your first orbit के लिए 1 square divided by 2, यानी 0.53 divided by 2 is 0.265 angstroms, यानी first option will be the answer. 30 beta. When a sample of this solid lithium is being placed in a flask of hydrogen gas, then following reaction happened. Hydrogen, lithium gives rise to helium and 2 helium particles. This statement is true, false, may be true at a particular pressure. None of the above for this one. Can anyone give me the answer for this one, beta? Nuclear reaction, beta. Given reaction is what? A nuclear reaction, which can take place only if the proton comes in contact with your lithium nucleus, isn't it? So in hydrogen in atomic form, the interaction between its electron cloud and the electron of lithium atom keeps the two nuclei getting close to each other. And agar wo isolated protons bhi hai, so they will be first fired into your lithium atom and enough kinetic energy will overcome for the electric repulsion. So obviously it is not possible for me. ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? दे शुड बी टेकिंग प्लेस ओनली इफ ए प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज कमिंग इन कांटेक्ट विद योर लिथियम न्यूक्लियस. ये तो hydrogen like an element, this is nothing but of your tritium, yttrium, deuteron, isn't it? So 1H 1 hai, it's not possible, so it should be a false. ठीक है, इसका की भी है बेसिकली. ठीक है, चलिए थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के भी देख लेंगे. नीट नहीं पोस्टपोन्ड होगा बेटा, कहाँ से? हाईकोर्ट ने तो डायरेक्टली केस ही रिजेक्ट कर दिया. देयर इज नो चांस. चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं बेटा पूरे सिलेबस पे रैंडमली. देखिए, there are conducting circulate loops and an observer position. ये तो EMI का है. हम लोग पहले मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं. ये सेकंड क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं क्या? देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे कुछ. A body of weight 2 kg has been suspended as shown in the figure. The tension T1 in the horizontal string will be equal to how much? कर सकते हैं क्या? देखो रिजॉल्व करना है बस, ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसा खींच लूं, इसको मैं अगर यहाँ पर ऐसा खींच लूं, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. चलिए, एक पूरा नीट का पेपर है, पूरा नीट का एक पेपर है. सो विल ट्राई टू डू दिस पेपर. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, EMI का है, वो बाद में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बेटा एक बार. A body of weight 2 kg has been suspended as shown in the figure. The tension T1 in the horizontal string will be equal to how much? ये देखो बेटा, अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 30 डिग्री होगा. और मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर. अगर इसके अंदर टेंशन है मान के चलो T2, तो यहाँ पर बन जाएगा T2 इंटू योर कॉस ऑफ योर 30, और यहाँ पर बन जाएगा T2 इंटू योर साइन ऑफ योर 30, यानी T2 cos 30 degrees is balancing your T1, or T2 sin 30 degrees will be balancing your 2 kg weight. है कि नहीं बेटा? तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए. तो दोनों में टेंशन कितना हो रहा है देख लीजिए पहले. सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है?
कितना आ रहा आंसर, किसी को आया? सर कल का आप मैराथन क्लास लेते क्या? कल क्या है डेट? 15 है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बताइए कितना आ रहा आंसर। टेंशन T1 in the string will be equal to your how much? यानी T1 will be balancing your T2 into cos 30 और T2 will be equal to how much बेटा? T2 will be equal to your, ये हो जाएगा 2 divided by your, ये हो जाएगा sin of your 30, isn't it? तो पूछ रहा क्या T1, यानी T2 की जगह 2 divided by sin of your 30 into ये हो जाएगा cos 30 is equals to your T1। आ गया? चलो बताइए किसी को आ रहा क्या आंसर? चैट बॉक्स में आंसर देना बेटा। बेसिक क्वेश्चन है। कितने जने दे रहे हैं? ठीक है चलिए मैं कर देता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 दैट विल बी इक्वल टू योर T1। ठीक है ना, A2 और A2 चले जाएगा तो T1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ योर √2, यानी दिस विल 2 ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया √3 इंटू 2, यानी 2√3 विल बी द आंसर। थोड़ा ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए वेरी गुड। फिर उसके बाद EMI का है वो बाद में कर लेते हैं। चलो ये है अपना इलास्टिसिटी क्वेश्चन। चलिए बताइए कोई कर सकता है क्या इसको? Rope 3 centimeter diameter has a breaking strength of 1.5 into 10 to the power of 5 Newton. The breaking strength of this similar rope 1.5 centimeter in diameter will be equal to how much? Breaking strength, see देखो बेटा, breaking strength is right now for me what बेटा? Force by area. Stress is nothing but what? Force by your area. Force by area क्या होता है? Constant होता है ना बेटा? Breaking strength यानी breaking strength of the similar rope, यानी इस पे जो stress लग रहा है basically, so basic strength बोलो या stress बोलो, it doesn't depend upon your area of contact, isn't it? So it is always remains for me a constant. So breaking strength will be equal to force by area. Breaking strength of similar rope यानी दोनों का same रह जाएगा, यानी force is directly proportional to area, and area of this one will be equal to pi into your r square, isn't it? तो अब देख लो कितना आ रहा है इसको। आ गया? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सिमिलर रोप of 1.5 centimeter and diameter will be equal to how much? Diameter दे रखा है, that is 2 times of radius, and r will be equal to your d/2. So d की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 यानी 3/2 into 2, यानी ये हो जाएगा 3/4। सेंटीमीटर्स में है तो into 10 to the power of -2, and rope of 3 centimeter diameter यानी फर्स्ट वन का, यानी D1 will be equal to your 2 times of your R1, तो R1 will be equal to your 3 divided by 2, यानी ये हो गया 1.5, isn't it? यानी this one is 1.5 divided by 2, यानी 1.5 will be equal to how much for me? R1 divided by 2, यानी R2 will be equal to R1, यानी force will be equal to how much for me? Breaking force will be breaking strength of the similar rope, तो उसको देख लीजिए, अब रिलेशन आ गया ना आप लोग ट्राई कर लीजिए। F1 by your F2 will be equal to your R1 square divided by R2 square, ठीक है ना? So that will give me the answer for that. आई बात समझ में सभी को? सेकंड ऑप्शन आ रहा था, चलिए मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वन देखो, out of the photon and electron the equation E is equals to PC is valid for, very good question बेटा। Energy is equals to P into C, our energy is equals to P is nothing but of your hc by lambda,
है ना, डायरेक्टली ये बोल रहा है hc by lambda है ना, दिस वन इज योर pc, दैट इज फॉर फोटॉन्स ओनली ना, ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन, उसके बाद सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, ये करना चाहिए आप लोग को, ट्राई करिए सभी लोग। बेटा आप लोग आंसर्स देख के मत बोलिए, आप लोग करिए, ऐसा नहीं है कि सेकंड में आप लोग आंसर दे रहे हो। A simple pendulum with a metallic bob has a time period of 10 seconds. The bob is now immersed in a non-viscous liquid of density 1/3 dot of the metal. The time period of the same pendulum will become how much for me? देखो जब इमर्स करते हैं टाइम पीरियड इन द लिक्विड, आप लोग को फॉर्मूला मालूम है, T is equals to 2 pi under root of your L divided by your G into your 1 minus of your rho divided by sigma, isn't it? So density of liquid कितनी होती है 1, लिक्विड बना है ना, तो 1 by your sigma ले लीजिए, तो कितना दे रखा है 1/3, एक्चुअली टाइम पीरियड कितना है, T is equals to 2 pi under root of your L by G, ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, T dash will be equal to your 2 pi under root of your L divided by G into, ये कितना आ जाएगा बताइए कोई, ये दे रखा है मेरे पास 1/1/3, तो कितना आ जाएगा ये 1 minus 1/3 2/3, यानी T dash will be equal to your 2 pi under root of your L by G into your, this will be under root of your 2/3 मतलब root of your 3/2, यानी T dash will be equal to your, this will become for me how much 10, because this value दे रखा है प्रॉब्लम में मेरे पास 10 into √3 divided by 2, so this will be the √3 पूरा 2 है ना बेटा, इसके लिए भी रूट है, यानी थर्ड ऑप्शन will be the answer। ठीक है चलिए, उसके बाद ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बाद में करेंगे, आइडियल गैसेस, हाँ ये हीट का क्वेश्चन है, ये ट्राई करिए। An ideal gas is compressed to half of its initial volume by means of several processes. Which of the process results to the maximum work done on the gas? कोई बताएगा? Anyone? Theory question है। 1. Ideal gas is compressed to what beta? Half of its initial volume by means of several process, यानी volume decrease हो रहा है, compressed to half of its volume, है कि नहीं? फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, आइसोकोरिक तो नहीं होगा, आइसोबारिक में प्रेशर कम है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, शुड बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, कंप्रेशन हो रहा है ना बेटा, कंप्रेस हो रहा है बेसिकली, आइसोबारिक कैसा होगा बेटा, बारीक तो नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस हैज बीन कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ योर इनिशियल वॉल्यूम, इजंट इट? अगर एक्सपेंशन हो रहा तो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा ना बेटा, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पर तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो नहीं होगा आइसोबारिक, आइसोकोरिक भी नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आइसोथर्मल तो टेम्परेचर है, सडन प्रोसेस है ना, बट डिफरेंट प्रोसेस इज कंप्रेस्ड, यानी इट शुड बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए एंगल ऑफ डिप का है, मैग्नेटिज्म देख लीजिए एक बार, 10th वन, उसके बाद 11th वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद ये उसका है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए बेटा, error का क्वेश्चन है, obviously I hope everyone can do this question. In the error in measurement of the length of a simple pendulum is 3%, time period is 1.5, then percentage error and calculation in the acceleration due to gravity will be equal to how much? Time period का formula बेटा T is equals to 2 pi under root of your L by G, है कि नहीं, यानी T square will be equal to your, this will be equal to 4 into your pi square L divided by your G, यानी G की वैल्यू विल बी इक्वल टू योर L डिवाइडेड बाय योर T स्क्वायर, बाकी का तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो एरर लिख रहा हूं मैं डेल्टा G बाय योर G इनटू योर 100,
परसेंटेज एरर पूछ रहा इज इक्वल्स टू योर डेल्टा एल बाय योर एल इनटू योर 100 plus this one is 2 times of your delta t by your t into your 100. So that will be equal to how much for me? There are measurement in the length दे रखा है मेरे पास 3% plus next one दे रखा है 1.5%. 2 times होगा ना ये तो into 2 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 6%. Very good. चलो A cube and a sphere made up of same material shown in the figure are allowed to cool under identical condition. तो ये है मेरे पास क्यूब 10 सेंटीमीटर और ये है मेरे पास स्फीयर उसका भी 10 सेंटीमीटर है. Allowed to cool under identical condition, then cube will cool at a faster rate, sphere will cool at a faster rate. Rate of cooling is independent of dimensions of a body. 2 and 3 are correct for me. याद है आप लोगों रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला? रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बेटा, rate of energy at which it is been cooled, that is d cube divided by your A into your T is equals to sigma T to the power of 4. Yeah, d cube is equals to your A. This one is right now for me your time layer हम लोग basically at a certain temperature right now. Rate. This one is nothing but of your T. So if I'm writing the rate d cube by your dt is equals to A into sigma T power of your 4. Isn't it? And then d cube by dt is directly proportional to area. Isn't it? Rate of cooling का फॉर्मूला क्या होता है? Q is equals to ms into your delta theta divided by your dt is equals to your A into sigma into t power 4. Sigma तो constant है ना बेटा वैसे तो. What happens? Rate of cooling is directly proportional to area. So cube will cool at a faster rate. जिसका area ज़्यादा होगा वो. Isn't it? Clear है? चलिए. So cube will cool at a faster rate. कितने जने आंसर दिए इसको? सेकंड ऑप्शन के लिए. Sphere will cool at a faster rate. Directly proportional area है ना बेटा rate of cooling. Next one. ये तो करना चाहिए. ये मैंने क्लास में भी करवाया था. The de Broglie wavelength of a thermal neutron at 927 degrees centigrade is lambda. Its wavelength is at 327 degrees centigrade. देखो बेटा अगर जुलाई 17 को एग्जाम हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू शेयर योर क्वेश्चन पेपर्स एज सुन एज यू कम आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल शार्पली एट योर 5 or 5:15 जैसे ही पेपर आ जाएगा विल ट्राई टू गो लाइव फॉर डिस्कसिंग द पेपर. ठीक है, जूम आईडी अपनी कॉलेज आईडी पे ही अपन डिस्कस कर लेंगे. मैडम को बोल दूंगा कोई ना कोई तो ऑन कर लेंगे 5 या 5:05 से ही या एग्जैक्टली 5 o'clock से वी कैन स्टार्ट. सो प्लीज ट्राई टू शेयर योर क्वेश्चन पेपर्स. एक स्क्रीनशॉट ले लेके एटलीस्ट इस पार्ट का ऑन इन द ग्रुप. ठीक है, जब हो सकता है जब एंड करते हैं बेटा क्या करना है ये देख लो. इसका आंसर बताइए किसी को फॉर्मूला याद है? de Broglie wavelength is inversely proportional to under root of your t, isn't it? So lambda 1 by your lambda 2 will be equal to under root of your t2 divided by your t1. तो ये कितने के साथ कहाँ जा रहा है बेटा? 727 डिग्री सेंटीग्रेड से 3. तो यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? lambda 1 is lambda divided by lambda 2 that is equals to under root of your. ये कितना हो रहा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना. सो इट इज लैम्डा 1 by lambda 2 is equals to your under root of t2 by your t1. यानी t2 is how much for me? Thermal neutron at 720 is lambda and its wavelength at 327. यानी 327 plus of your 273. So that will be equal to how much for me? Plus 273 कर लीजिए. ये हो गया मेरे पास 600 डिवाइडेड बाई इसको भी प्लस 273 कर लीजिए. सो दिस विल बी योर 1200. तो ये वाला और ये वाला चले गया 6 1 जा 6 2 जा यानी 1 by root 2 यानी lambda 2 will be equal to root 2 times of lambda. यानी फर्स्ट ऑप्शन would be the answer for this. ठीक है ना. चलो खाली मैं मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ बेटा, बाकी का आप लोग कर लीजिए. मैं पेपर भेज देता हूँ फिर. ये क्यूब है ना बेटा, isn't it? इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू योर L square, isn't it?
वैसे कितने साइड्स होंगे, 6 साइड्स रहेंगे, तो इसका हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ योर एल स्क्वायर, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, कोई आंसर कर सकता है? मॉडर्न फिजिक्स का ये। When a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda, the stopping potential for photoelectric current is 3V0, and when the same surface is illuminated with light of wavelength 2 lambda, stopping potential is V0. The threshold wavelength for this surface of the photoelectric effect will be equal to how much? Einstein photoelectric equation लिख लीजिए बेटा अपने को। एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, E is equals to your work function plus of your kinetic energy, यानी HC divided by lambda is equals to your HC divided by lambda naught plus kinetic energy half into m into your V max square। ठीक है ना, इसको हम लोग पोटेंशियल में लिख लेते हैं बेसिकली। तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखो जल्दी से, अगर E into V naught को अगर मैं बाहर निकाल के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो दैट विल गिव मी द आंसर। आप लोग एक बार कर लीजिए, HC divided by lambda minus HC divided by lambda naught is equals to, ये हो जाएगा 3 times of your V naught, isn't it? So this one is divided by HC divided by lambda, ये कितना हो जाएगा 2 lambda minus of your HC divided by lambda naught, this one is divided by your E times of V naught, E V naught, E V naught, SC, lambda will also will get cancelled right now here। तो ये कितना बन जाएगा देख लीजिए, so कितना आ रहा है देखिए, 1 by 2 times of lambda, 1 by 2 times of your lambda is equals to 2 by your lambda naught into 3 minus 2 divided by 2 lambda। इसका एलसीएम कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर फॉर दिस। और आगे नहीं करके मैं कर देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखो बेटा, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1 by lambda minus of 1 by lambda naught will be equal to 3 into 1 by 2 times of lambda minus 1 by your lambda, isn't it? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. I'm leaving the calculation for you. Question number 17. A body cools down from 60 to your 55 in 5 minutes. It will cool down from 55 to 15 how much? याद है किसी को? Rate of cooling. The body is cooling from your 60 degree से लेके 55 degree centigrade को cool हो रहा है in a time of your how much for me? 5 minutes. उसी तरह से it is cooling from your 55 to 50 degree centigrade in how much time? Rate of cooling dq by dt is directly proportional to your temperature difference, that is T1 plus T2 divided by 2 minus surrounding temperature, isn't it? दो इक्वेशन लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer। या न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग का अब मुझे पता नहीं हो कितना आ रहा हो, आप लोग करके एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। In VDSC water has been filled in the space between the slit and screen, then what happens? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। Fringe width का फॉर्मूला बीटा is equals to your lambda into capital D divided by your small d। Wavelength change हो जाएगा, बीटा is equals to your, so when it is immersed in water, beta dash will be equal to how much for me? Beta divided by lambda. The fringe width will be decreasing and fringe pattern will not shift. Second option. Question number 19. ये तो रे ऑप्टिक्स का है, वो बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रिक्शन का है, उसके बाद काइनेमेटिक्स, कैपेसिटर्स, थिन प्रिज्म, पार्टिकुलेशन, थिन प्रिज्म का भी फॉर्मूला है, वो भी हम लोग बाद में कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो बेटा, डायोड का क्वेश्चन है। इन द सेमीकंडक्टर्स का, इन द फिगर शोन अज्यूमिंग द डायोड्स टू बी एन आइडियल, तो ये देखो ये P है और ये N है। P is connected to -10 and this one is right now for me N, this is a diode too and this is an earth, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली कौन सा बायस हो जाएगा बेटा? दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी रिवर्स बायस्ड, यानी इसका पोटेंशियल हो गया 0 यहाँ पर, isn't it? तब ये कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। सो ऑब्वियसली D1 is reverse biased, D1 and D2 reverse biased, D1 is forward biased, D2 is forward biased, D1 is reverse biased, and no current will flow from B to A and vice versa. Fourth option will be the answer. Direct question. Question number 26. कोई बताएगा आंसर? In hydrogen atom, the frequency of revolution of the electron in the first excited state is F. The frequency of revolution in the second excited state will be equal to how much? Frequency is inversely proportional to your n cube. मैंने क्लास में भी पढ़वाया था।
So if it is your f divided by your f dash will be equal to your n dash cube divided by your n cube. ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer. Next one. मुसलमानों पे से कर लिए, एक बार आप लोग देख लीजिए बेटा क्वेश्चंस. इस सेमीकंडक्टर का है, देखिए एक बार ट्राई करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ योर 1? बताइए ये कौन सा गेट है बेटा? और गेट है, isn't it? ये 0 1 1 ये नॉट है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा, तो इसका नॉट 0 आ जाएगा. ये और गेट है, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा और इसका भी 1 आ जाएगा. तो ऑब्वियसली 3 and 4. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 एक बार ट्राई कर लीजिए बेटा. ग्रेविटेशन का ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट प्रॉब्लम, ये भी एक बार ट्राई कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 34 भी एक बार ट्राई कर लीजिए. ठीक है, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन से ऊपर. वाला नॉर है क्या? हाँ नॉर ही है, नॉर है, नॉट है ना बेटा, इसलिए मैंने मैं यहाँ पर 0 1 and 1 1 आता, उसका नॉट 0 हो जाएगा ना. ये भी उतना ही है, पूरे नॉट केज के डाल पूरे देखो 0 0 6 मैंने सिंबल बराबर लिख लिया था. ठीक है चलो दिन बेटा, टेक केयर, बाय.